अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केपीपीएससी का एसएस बायोलॉजी फीमेल का पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 is the movement of plant response to internal and external stimuli are of, so there are two types of the response. The action of enzymes chyme converted into watery emulsion is known as the chyle. Best answer is the chyle. The secretory glands of digestion is are liver, pancreas, gallbladder. So all of them are the secretory glands. The study of the diseases of the cardiovascular system is called एंजियोलॉजी। अगर सिर्फ कार्डियो सिस्टम आए या सिर्फ हार्ट है तो फिर कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो इट इज द एंजियोलॉजी। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेन्स और आर्टरीज दोनों इंक्लूड होते हैं। The hole in a heart, this defect in a baby is called, क्योंकि हार्ट में होल होता है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होते हैं, तो इट इज द ब्लू बेबी। The T lymphocyte cells are also known as the cytotoxic T cells. When tissue and the cells of the body damage which one of the following chemical is produced, तो जब टिश्यू डैमेज होता है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं। तो केमिकल मीडिएटर्स में हिस्टामिन भी एक केमिकल मीडिएटर है। The artificial immunity is known as vaccination, immunization, to both of them. The large dome skeletal muscle that spread the thoracic cavity and abdominal cavity, this is called the diaphragm. The movement of protein moves the two ions in opposite direction and maintain balance is, that is the Calorian shift. In those animals in which waste products is measured nitrogenous waste, the waste product is called both of them. जिसमें यूरिक एसिड भी हो सकती है और यूरिया भी हो सकता है। The 33 vertebral column divided into how many groups? So these are the 5 groups. The immobility and fusion of vertebral joint is called spondylolysis. The tendency of genes remain together on chromosome is called linkage. The oxidative takes place in oxidative mitochondria में होती है, जिसके नतीजे में ATPs बनती हैं। Agar is extracted from the red algae. How many types of muscles are found in muscles? Tissues are present in animals. So there are 3 types of the muscle tissues present in the animals: skeletal muscles, cardiac muscles, and the smooth muscles. The branch of biology deals with the study of algae. It is called the phycology. इसको algaeology भी कहते हैं. The nervous system found in all except Cnidaria, mollusca, nematode, porifera. तो porifera में nervous system नहीं होता. How many molecules of carbon dioxide fix in the light reaction? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो डार्क रिएक्शन में फिक्स होते हैं, लाइट रिएक्शन में फिक्स नहीं होते। लेकिन जो नंबर है वो हमने सिलेक्ट करना है, तो दैट आर द 6। तो लाइट की जगह हम डार्क रिएक्शन करेंगे। The study of the muscles is known as mycology. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो दोनों ठीक नहीं है, बल्कि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो असल में इसका आंसर है मायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज द मायोलॉजी। तो अब इनमें से अगर यहाँ पे सी को आप हटा दें तो मायोलॉजी बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किसका सी हटाना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज द मायोलॉजी। जो टेक्निकल मिस्टेक है पेपर में, द स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज द मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 इज all hormones are organic substances and chemically differentiated into how many categories? So there are 3 categories of the hormones. Endocrine system is a type of the glandular system which consists of 20 ductless glands. The master gland of the body is the pituitary gland. The movement is direction without the stimuli. It is a taxis. The area of defense by an organism with the same or different species called, so it is the territory.
How many types of the inheritance found in an organism? So there are two types of inheritance: continuous or discontinuous inheritance, or qualitative or quantitative. The family which is economical most important it is the Poaceae family. The erythroblastosis fetalis is a disease of the genetic disorder क्योंकि इसमें RH फैक्टर इन्वॉल्व होता है और एंटीबॉडीज बनती हैं इसके अगेंस्ट, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. In wheat, different color of the grain appear due to the polyploidy. The protein found in spinal fiber is the tubulin proteins. The shape of RBC in sickle cell anemia is, अगर ये सिकल शेप होता यहाँ पे तो अगर क्रिसेंट शेप होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है तो ओवल शेप अब यहाँ पे हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर ये क्रिसेंट शेप या sickle shape. PCR stands for polymerase chain reaction that amplify the sequence of nucleotide. The Mn blood group develops due to the codominance. क्योंकि दोनों कैपिटल हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो इट इज द codominance. MCQ number 36 is due to the nutrient deficiency blood fails to clot the vitamin is. तो कौन से विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉट डिफिशिएंसी होती है? विटामिन के, क्योंकि विटामिन के हेल्प इन द blood clotting. The methods of plant breeding for crop improvement is selection by cross or hybridization. All of them is the good answer. The permanent change in the sequence of DNA content and form new allele is known as the, इसमें mutation और chromosome mutation दोनों हैं, तो both of them. The polydactyl condition, that is a six finger formation, is due to the aneuploidy. All acellular organism belong to the, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर यूनिसेलुलर होता तो फिर प्रोटोजोआ आंसर ठीक है. अब चूंकि यहाँ पे एसेलुलर लिखा हुआ है तो उसका आंसर आएगा वायरसेस, तो इनमें से कोई भी एसेलुलर नहीं है. प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर होते हैं, पोरीफोरा भी जो है ये सेलुलर होते हैं, इसमें सेल्स होंगे, और स्पॉन्जिस भी, तो ऑल ऑफ देम. तो एस मतलब कोई भी एसेलुलर इनमें नहीं है, तो एसेलुलर मतलब विदाउट सेल, तो एसेलुलर की जो डेफिनेशन है वो वायरसेस के लिए फिट आती है. तो यहाँ पे अगर यूनिसेलुलर हो तो फिर प्रोटोजोआ आंसर ठीक है, अगर एसेलुलर है तो फिर वायरसेस है. द फैमिली ऑफ पीएससी इज आल्सो नोन एज द ऑल ऑफ देम. तो पीएससी फैमिली को हम अम्ब्रेलियासी फैमिली भी बोलते हैं, कैरेट फैमिली भी बोलते हैं, और पार्सली फैमिली बोलते हैं. The mesosomes of the bacteria perform following additional functions: respiration and photosynthesis, both of them. The large brown algae of ocean is known as the kelp. Succulent tissues are found in the xerophytes. The ability of regeneration distinctly found in the phylum. चूंकि यहाँ पे वर्ड phylum का आया है तो यहाँ पे नाइडेरिया आएगा, रेप्टाइल्स नहीं आएगा. रेप्टाइल्स इज अ क्लास नॉट अ फाइलम, तो यहाँ पे जॉब क्या है? नाइडेरिया. Thank you so much. This is all about the SS Biology Female Paper 2022. Keep watching Biology Learning Zone for more paper and for more lectures and MCQs.